The Indian Parliament holds 3 sessions each year: budget session, monsoon session and winter session. This is the story of Monsoon Session 2015. The opposition made it amply clear that the External Affairs Minister Sushma Swaraj and the Chief Minister of Rajasthan, Vasundhara Raje, must tender their resignations in the light of Lalit Gate scandal, or the government should prepare itself for a complete washout of the monsoon session. सुषमा स्वराज जी के मामले में जिस तरह से उन्होंने गैर कानूनी और अनैतिकता से ललित मोदी को मदद किया, उनको भी अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पार्लियामेंट से पहले जो लोग ललित गेट में इन्वॉल्व हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनसे इस्तीफे लेने चाहिए। It is set to be a stormy session. Keeping in view the stand of opposition, government called an all-party meeting to avoid a washout. Our top story at this moment, the all-party meeting to discuss ways to ensure functioning of both houses has now begun. Prime Minister Modi has also arrived at the meeting. Leaders from opposition parties like the Congress, the Left, the Samajwadi Party and the JDU are taking part. Emerging from the meeting, Prime Minister Narendra Modi expressed confidence in smooth functioning of the parliament through this session. कल बहुत ही अच्छे माहौल में सर्वदलीय बैठक हुई है। But on the very first day of the monsoon session, opposition started to disrupt the proceedings of the parliament. Monsoon mayhem, a storm, a washout. Call it what you may, but that's what Parliament session looks like on day 1. June till 12 o'clock. In the event of disorderly conduct, I would be constrained to initiate appropriate disciplinary action against the hearing members. Both houses were adjourned today without transacting any business for the 3rd day in a row. Sit down, please sit down. Day 3, but the same scene of disruption, noises and chaos. And raises points of order. Yes, sir. At the highest seat of decision-making, Indian Parliament. फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ्यूगिटिव को भगोड़े को जो सपोर्ट किया, ललित मोदी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर जो चोरी करके भागा, उसको पद्म भूषण देने के लिए भी उन्होंने रेकमेंड किया। Due to his exquisite record as chairman of Rajasthan Cricket Association, Lalit Modi had been recommended for Padma Awards in 2007, which is one of the highest civilian awards in India, just like Order of British Empire in Britain or Presidential Medal for Freedom in America. चर्चा करना नहीं चाहते, वो केवल सदन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सरकार डिस्कशन के लिए सुबह भी तैयार थी, आज भी तैयार है, और ये खेद का विषय है कि कांग्रेस डिस्कशन नहीं चाहती, डिस्टर्बेंस चाहती है। So the logjam between the government and the opposition, it seems, is never ending. The Congress determined to stage a protest at Gandhi statue outside Parliament. All the top leaders of the Congress party, Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi herself, Rahul Gandhi, A.K. Antony, everyone is there wearing black bands on their arms and just protesting at the Gandhi statue against the suspension of 25 MPs by the Lok Sabha Speaker. This was, of course, due to the ruckus that was created by the opposition in the House. Congress mounts attacks on the government. Government prepared to discuss any issue. Nevertheless, Rajya Sabha proceedings disrupted. As opposition pressure mounted, both BJP President Amit Shah and Home Minister Rajnath Singh came out and gave a clean chit to Sushma Swaraj. सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है, और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। मुझे लगता है इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, न कोई बड़े मॉरल ग्राउंड का मामला है। किसी भी व्यक्ति को मानवीय आधार पर उसकी पत्नी की कैंसर का इलाज करने के लिए जब उसके सिग्नेचर की जरूरत हो, तब सहायता करने में कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं बनते। Congress demanded discussion on the so-called Lalit Gate. Government agreed. पहले दिन से मैं इस कोशिश में हूँ कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूँ।
फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ्यूगिटिव को भगोड़े को जो सपोर्ट किया, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम किनको बताएं? ये सदन के जो नेता हैं उनको ही हम बता सकते हैं। In last 24 years, Lalit Modi's wife Minal had suffered 17 cancer bouts. The latest one forced her to undergo a life-threatening operation in Lisbon, where her doctor recommended that her husband should be by her side for the critical operation. But since Lalit Modi's passport had been impounded, he couldn't travel out of the UK without intervention of the Indian Foreign Ministry. एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और ऑपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वो ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। सुषमा जी ने कल बड़े भाषण दिए, बहुत लंबी लंबी बात की, मतलब जो हमने 2 सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया। सिंपल सवाल था, आपको कितना पैसा मिला? 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में मेरे ललित मोदी से नहीं लिया। एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? हमारी विदेश मंत्री जी एक भगोड़े को लंदन में ट्रांजिट, अरे इस मोदी को नहीं, इस मोदी को कह रहा हूं भाई, मोदी को लंदन में रहने के लिए वहां से ट्रांजिट वीजा देती है। Issue relating to the External Affairs Minister is merely a pretext. The real reason is they don't want Indian economy to grow, and that is why section after section they have been looking for one pretext or the other. अब यहाँ पे मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं आपका विपक्ष का नेता हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ललित मोदी को पकड़ के यहाँ लाओ और क्रिकेट की सफाई। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति ये लगती है कि कोई दूसरी सरकार आए तो उसको रोकना है। There was a clear pattern in the manner the parliament was disrupted day after day on the name of Lalit Gate. Opposition was less interested in debating Lalit Gate with government and more interested in disrupting the house over it. Lalit Modi came forward and put out his side of the story. I have done nothing wrong. My wife was very sick and I appealed to them for their help to ensure that I was able to go and be with her. I have been proven by the UK courts that everything done against me was politically motivated by the last government. The constant disruption of parliament found its way into headlines of every newspaper and every news channel covered it comprehensively. तो कांग्रेस अपना विरोध इसे लेकर लगातार जता रही है, कभी काली पट्टी बांधती है तो कभी सदन के भीतर सांसद हंगामा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू इस शोर शराबे में साथ खड़ी है। संसद के सदन का मॉनसून सत्र खत्म होने में अब 2 दिन बाकी, लेकिन ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि देश में एक टैक्स वाला जीएसटी बिल पास हो पाएगा। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस देश की तरक्की रोक रही है? The government finally caved in to opposition's demand for a red corner alert request to Interpol. Which was the legally sustainable action that your government took. So you were taking the wrong steps and creating a false cloud that as though you were doing something and the present government is favoring him. The truth is to the contrary. The correct steps, that is registration of case under PMLA, activation of that case, summoning him in that case for the first time, getting a non-bailable warrant against him, moving for a red corner alert against him. These are all steps which will be taken now. It's looking more and more imminent now that this monsoon session is going to be an absolute washout. Not one policy was framed or formulated as the entire monsoon session this year was washed out completely. आज भी संसद में कोई काम नहीं हुआ और इस तरह बिना किसी कामकाज के संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। Lalit Modi, is he really wanted for questioning in India? Or a victim of political tug of war
between India's largest political parties.